पेज नंबर, ओके, और for dispersion of white light by prism। सी डिस्पर्सन ऑफ वाइट, डिस्पर्सन का सबसे पहले मतलब क्या होता है? हाँ, splitting of white light into its constituent colors upon passing through prism। ठीक है, व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन क्यों होता है? व्हाई डू द लाइट स्प्लिट? नॉर्मली चलते रहते हैं तो वो स्प्लिटेड नहीं रहते हैं। व्हाई डू दे स्प्लिट व्हेन दे पास थ्रू प्रिज्म? राइट, दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो जनरली किसी भी मीडियम में वो चल रहा है लाइट, ऑल द ये colors are moving with same speed. Is that okay? When Okay, sir. moving or while moving in any medium, while moving in any medium, white lights constituent colors move at same speed। ठीक है, or we can say while moving in air rather than any medium, while moving in air slash space, white light's constituent color move at same speed and hence move together। ठीक है, अगली चीज ये होती है when they enter into prism। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर, तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, so all are going to move with different speed, and as their refractive index are different, they are going to be refracted at different angle। Are we getting this point? So दो चीजें चेंज हो रही हैं। पहला, स्पीड ऑफ मोशन, उनका स्पीड, जिस स्पीड से वो चलते हैं वो सबका वैरीड हो रहा है, वैरी हो रहा है। और दूसरा चीज क्या हो रहा है? द रिफ्रैक्शन एंगल्स आर गेटिंग डिफरेंट। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे स्प्लिट। ठीक है, अब पॉइंट होता है कि फर्स्ट वाले फेस पर वो स्प्लिट कर गया, तो ऐसा तो फिर स्लैब में भी होना चाहिए था कि उसमें स्प्लिट करें और फिर बाहर स्प्लिटेड आए। व्हाई इट इज हैपनिंग ओनली इन प्रिज्म? प्रिज्म का apparatus जो होता है, प्रिज्म जो होता है हमारा, दैट इज सच दैट पहला वाला फेस और दूसरा वाला फेस, दे आर एट एन एंगल टू, दे आर एट सम एंगल, ठीक है, विथ ईच अदर, कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। पहले वाले फेस पर वो स्प्लिट कर गए दो कलर्स में या तीन कलर्स में या पांच कलर्स में,
और अलग अलग पाथवे फॉलो करके वो दूसरे वाले फेस पर पहुंचे। यहां पर उनका फर्दर रिफ्रैक्शन होता है and they get further separated. Why? Because this second phase is not parallel to the first phase, which is going to nullify the refraction angles or the deviations which has been created at first phase. First phase for the level of deviations which has been created for different lights is not nullified at the second phase, rather it is further broadened. Are we getting this point? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? तो फर्स्ट फेज पर सबको थोड़ा सा डिविएशन मिला, मान लो डेल्टा 1 का डिविएशन मिला। सेकेंड फेज पर अगर -डेल्टा 1 का सबको डिविएशन मिल जाएगा तो सब फिर से एक साथ आ जाएंगे। लेकिन ये डिविएशन -डेल्टा 1 ना हो करके अगर +डेल्टा 2 कुछ और एंगल से और एडिशनल डिविएशन मिले तो वो फाइनल बाहर वाले मीडियम में जब फिर से एयर में आएंगे दे विल स्टिल बी सेपरेटेड and will be moving in with different velocities at different following different pathways. ठीक है? And this happens to be the prime reason for dispersion. Are we getting this point? Is that okay? Yes, sir. Okay. Now I'll write it like this. While a white light is incidented on a glass slab. अब ये भी एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला एक्चुअली इसके साथ अगर एक दूसरा प्रिज्म इसी तरह का उल्टा करके अगर हम लगा देते हैं तो ये बेसिकली एक ग्लास स्लैब बन जाएगा पैरेलल फेस वाला, और उस केस में डिस्पर्सन होना बंद हो जाता है और फिर से एक व्हाइट लाइट हमारा निकलता है। सॉरी, इस डायरेक्शन में नहीं निकलेगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा, विच विल बी पैरेलल टू द प्रीवियस वन। ये अब एकदम परफेक्ट स्लैब की तरह बिहेव करने लगा और इसको हटा दिया तो ये सारे सेपरेट निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास स्लैब के भी फेस पर जब वो एंटर करता है, अगर वो परफेक्टली नॉर्मल नहीं एंटर कर रहा है तो दिस डिस्पर्सन, दिस स्प्लिटिंग अप इज टेकिंग प्लेस ऑन द फर्स्ट प्लेस, अगर नॉर्मल नहीं एंटर कर रहा है तो। एंड सेकेंड फेज पर जो पैरेलल फेस है वहां पर सेम लेवल का अपोजिट डिविएशन हो जाता है जिसकी वजह से वो कंबाइन होकर के फिर से निकलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? While a white light is incidented on glass slab at some angle, the constituent colors have different refractive index index and hence they deviate during refraction at first phase of the glass slab by some
एंगल। सम एंगल के बदले सम डिस्टिंक्ट एंगल्स। डिस्टिंक्ट एंगल्स मतलब सारा लाइट जो है वो अलग अलग एंगल पर डिविएट करेगा, या सारे का डेविएशन एंगल जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट। सम distinctively different deviation angles. Is that okay? However, when they pass through the second phase of the slab to enter into the air medium again, all the constituent colors get deviated by exactly same deviation angles but with opposite signs. Thus, when they emerge in air medium, when they emerge in air medium, they recombine to form white light. ठीक है। सो पहले वाले में अगर उनका सबका अपना डिविएशन एंगल्स डेल्टा आई है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम बट इन अपोजिट साइंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब क्या है, आइथ कलर का लाइट जो है उसका डिविएशन डेल्टा आई है, और यहाँ पर माइनस डेल्टा आई है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, माइनस डेल्टा आई, तो डेल्टा आई और माइनस डेल्टा आई मिल करके हो गया 0, एंड देयरफॉर स्लैब के थ्रू डिस्पर्सन होता हुआ हमको दिखता नहीं है। ठीक है, बट वहीं अब प्रिज्म के केस में क्या होगा, प्रिज्म के केस में होता ये है कि पहले वाले फेज पर डेल्टा आई हुआ,
तो दूसरे वाले फेस पर डेल्टा डैश आई हो जाएगा, अ डिफरेंट एंगल, and not in negative direction, negative or opposite sense, but in the same sense. Are we getting this point? और इसलिए हमको वहां पे they appear to be distinctively different और 7 कलर में वो स्प्लिट होकर के मिलते हैं. So we will take a note of that. When white light is incidented on the face of a prism, or say first face of the prism, they undergo refraction by different angles and different angles and have different speed too. Hence, they move they मतलब individual colors, hence light of individual colors move separately. Hence, light of individual individual colors move separately. ठीक है. Next thing, move separately and they get split. And thus splitted. ठीक है. अभी next, in the medium of prism, in the medium of prism, these distinctive or these distinct colored light rays move separately and approaches move separately with different speeds, with different speed and approaches second phase of the prism. Is that okay? Second phase of the prism पे आने के बाद इनका क्या होगा?
सेकेंड फेस ऑफ प्रिज्म पे आने के बाद ये फर्दर, अगर ये दूसरा वाला प्रिज्म नहीं है तो what is going to happen to them? They are going to be further deviated, so their extent of deviation is going to increase. Are we getting this point? Yes, sir. Hmm. Approach towards the second phase. On second phase of the prism, which is inclined at a different angle than first phase, further adds to the deviation of individual colored light rays by different distinctive angles in same direction, thus adding up into the deviation at first phase, adding up into the deviation at first phase. Hence, these distinct distinct colored light rays move separately but with same speed upon emerging in air. Is that okay?
आर वी गेटिंग दिस एंटायर थिंग? हाँ सर, और फ्राइडे को क्या लेक्चर, क्या शेड्यूल रहेगा सर? फ्राइडे को रहेगा, मॉर्निंग में मैं नहीं हूँ, फ्राइडे को दोपहर में रजनीश सर का लेक्चर के बाद फिर मेरा लेक्चर रहेगा। दोनों लेक्चर्स रहेंगे। पहले केमिस्ट्री का रहेगा, ठीक है, अच्छा। हाँ। और उसके बाद मैं लूंगा ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स वाला तुम लोगों का फ्राइडे को रहेगा अच्छा। करीब 3:30 से। तो मैं पहला वाला लेक्चर लेकर के 2 सवा 2 में तुम लोग को छोड़ दूंगा, घर अच्छा। चले जाना, फिर वहां से 3:30 से तुम लोग अटेंड करना, सवा ठीक। तीन से 3:15 ठीक। से, ठीक है। फ्राइडे वाला सबसे पहला वाला कब से होएगा? फ्राइडे वाला पहला लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा 12:30 से, ठीक है सर। 12:15 से लगभग 12:15, 12 बजे तक आ जाना, 12 या थोड़ा पहले आ जाना। ठीक है सर। 12:15 से चालू करूंगा एंड देन विल गो टिल 2, 2 बजे छोड़ूंगा, फिर वो 9th वाले का लूंगा, फिर तुम लोगों का ऑप्टिक्स वाला लेक्चर लूंगा। 3:30 बजे को ना? हाँ, ठीक है। 3:30 नहीं, 3:15 के आसपास, थ्री चलो। फिफ्टीन सो दैट 4:45 तक मैं फ्री हो जाऊं। ठीक है सर। ठीक है। कर्तव्य, Yes, sir. फ्राइडे 3:15 to 4:45, ओके फॉर यू? No, sir. क्या हुआ? I have chemistry from 2 to 4. केमिस्ट्री 2 to 4 है? हाँ. तो फिर रात को करना पड़ेगा इसी तरीके से, 8:15 से 8:15, 8:30। Okay, sir. No problem. ठीक है। तो फिर केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। मैं 12:15 से चालू करूंगा एंड इट विल गो टिल फिर 2:45, 3 बजे तक आप लोग का लूंगा, फिर उसके बाद 9th वाले को पढ़ा लूंगा, उसको 3 बजे बुला लूंगा, फिर आप 8 बजे को वापस लोगे? और फिर 8 बजे से ऑप्टिक्स वापस लूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। दैट विल बी द, ये, ओके। देर आर 2 टर्म्स, इस डिविएशन या डिस्पर्सन में 2 टर्म्स होते हैं। पहला टर्म जो होता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन प्रिज्म, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म। तो ये 2 चीजें हैं, इन दोनों को हम लोगों को समझना है। एंगुलर डिस्पर्सन क्या है एंड डिस्पर्सिव पावर क्या है। एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। जनरली रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। अच्छा, पहले हमने जो ये डेरिवेशंस वगैरह किए हैं उसमें ये फाइनल जो डेरिवेशन आया था डिफ्रैक्शन, सॉरी, डिस्पर्सन का, कुछ इस तरह का आया था। आ गया। हाँ, डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंगल ऑफ प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इज इक्वल टू, या डेल्टा एम इज इक्वल टू μ-1 × a। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक्सप्रेशन है, दिख रहा है ना? तो हाँ सर। किसी भी किसी भी रे का अगर डिस्पर्सन होता है, ठीक है, यानी, तो सपोज दिस इज माय प्रिज्म, यहाँ पर शुरू में व्हाइट लाइट आता है,
व्हाइट लाइट को हम येलो लाइट से शो करेंगे. इट विल स्प्लिट इनटू मल्टीपल कलर्स. डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेड के लिए सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसका लैम्डा सबसे कम होता है, और वॉयलेट के लिए सबसे कम होगा, सॉरी वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. म्यू ऑफ वॉयलेट लाइट is going to be greater than mu of red light. ठीक है. lambda of violet light is less than lambda of red light. और कॉसेस फॉर्मूला से हमको ये पता है कि म्यू और लैम्डा कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है. ठीक है. और डिविएशन की जब बात करेंगे तो दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, डायरेक्टली रिलेटेड टू म्यू. सो डेल्टा ऑफ v इज गोइंग टू बी मोर देन डेल्टा ऑफ r. इज दैट ओके? सो रेड वाला पार्ट जो है वो सबसे कम डिविएट होगा, एंड सपोज वो सबसे कम डिविएट होकर के वो ऐसे निकलता है, और वॉयलेट वाला ब्लू वाले जो है ये सबसे दूर जाके निकलेंगे, सबसे ज्यादा डिविएट होंगे. ग्रीन वाला जो है वो इन बिटवीन रहेगा. इज दैट ओके? फर्दर यहाँ पर सेकेंड डिस्पर्सन पर, या सॉरी सेकेंड फेज पर फर्दर ऐसे निकलेगा, ये वाला ऐसे निकलेगा. ठीक है. थोड़ा और ऐड होकर के, और ब्लू वाला भी थोड़ा और ऐड होकर के ऐसे निकलेगा. इज दैट ओके? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ऑब्वियसली सबके लिए एंगल जो है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन दैट इज गोइंग टू बी, एंगल ऑफ deviation that is going to be different. ठीक है ना. ये हो गया ओरिजिनल, ये हो गया रेड के लिए एंगल ऑफ डिविएशन, ग्रीन के लिए एंगल ऑफ डिविएशन. ठीक है. और ब्लू के लिए एंगल ऑफ डिविएशन. what I can do is, एक सेकेंड. हम्म. आई होप ये चीज हम लोग को दिख रही हो प्रॉपरली. यस सर. ठीक है ना. और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, सबका एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो अलग अलग रहेगा. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट. इसके लिए ये रेड का डिविएशन है, ये क्या है, ब्लू का डिविएशन है. राइट. डेल्टा वॉयलेट या ब्लू जो बोलना है बोल सकते हैं, और ये डेल्टा ग्रीन का डिविएशन है. सब अलग अलग एंगल से डिविएट हो रहे हैं. राइट. अभी अब मुद्दे की चीज ये है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ये डेल्टा डिविएशन ऑफ वॉयलेट लाइट एंड रेड लाइट का डिफरेंस, या
difference of green and red, deviation in difference of deviation of green light and red light. ठीक है? This thing is called angular dispersion. Are we getting this point? So angular dispersion is defined as angular dispersion of two different colored light is difference of their angle of deviation. Are we getting this point? Angular deviation generally हम थीटा से डिनोट करते हैं, ऊपर लिखा है मैंने. Thus theta will be equal to, suppose हम violet या red का ले रहे हैं, तो theta is going to be delta v minus delta red. ठीक है? This is angular dispersion of violet and red light. Is that okay? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Next thing is, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा मेरा? डेल्टा वी कैन बी रिटन एज म्यू वी, refractive index of violet color, minus refractive index of red color, sorry, refractive index of violet color minus 1 into angle of prism, minus refractive index of red color minus 1 into angle of prism. ये बात समझ में आ रही है? And this is applicable for thin prism, which is the area of consideration for us for thin prism. For thin prism, delta is equal to mu minus 1a. That is what we are applying over here. Multiply करके देखेंगे तो क्या आएगा? Mu va minus a minus mu ra plus a. A cancel हो जाएगा. It will simply become mu v minus mu r into a. Angle of dispersion क्या होगा? सॉरी, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा? जिन दो लाइट का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनका डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लाइट इन प्रिज्म minus refractive index of other light into the other colors light into in the prism multiplied by angle of prism. Is that okay? Hello. अच्छा, कर्तव्य कल का तुम्हारा क्या है शेड्यूल? कल तुम कितने बजे
तो कल का ही पूछा था क्या सर मैं? कल 4:15 तक तो मैथ्स रहता है, 2:45 to 4:15। अरे यार, बट शायद मैं अगर कल स्कूल नहीं जाऊंगा तो मैं आपको सुबह को इन्फॉर्म कर दूंगा सर। हाँ अगर नहीं जाते हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, फिर ऑप्टिक्स का लेक्चर पहले ले लूंगा मैं। तो देन फ्राइडे को क्लास नहीं लोगे आप? क्यों नहीं लूंगा? अरे मतलब सॉरी, अरे हाँ। बहुत पढ़ाना बाकी है। हाँ सर, सॉरी। गोइंग टू कंटिन्यूअसली टेक द लेक्चर्स, नो सर डिस्टर्ब। ऐसा है तो आप एवरी डे अभी 8 to 9:45 10 तक क्लास ले लो ना सर, पोस्ट हाँ मैं बहुत ले टाइम। लूंगा, लगभग हर दिन लूंगा मैं। लाइक ट्यूसडे लूंगा मैं, वेडनेसडे वेडनेसडे को शायद नहीं लूंगा, ट्यूसडे लूंगा, थर्सडे लूंगा, और सैटरडे मंडे वगैरह को भी मैं, क्योंकि अभी मुझे लेना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, संडे को भी मैं सर लूंगा। फ्राइडे? 3 लेक्चर्स तो लूंगा, फ्राइडे को शायद नहीं ले पाऊंगा, फ्राइडे को मेरा एक दूसरा लेक्चर रहता है, तो फ्राइडे वाला जो है वो ट्राई करूंगा मैं दिन में एडजस्ट करने के। एंड संडे? संडे को तो लूंगा, संडे को मॉर्निंग में लूंगा। ओके सर। और सैटरडे को तुम्हारा स्कूल रहता है क्या? नो सर, बट इस सैटरडे पीटीएम है। चलो छोड़ो, संडे को लूंगा मैं, संडे को अब एकदम परफेक्ट शेड्यूल डालना होगा सर आप एक। सैटरडे शाम को ले सकते हो, बिकॉज आई हैव नो अदर क्लासेस ऑन सैटरडे। सर क्या 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 शेड्यूल है, वापस बता दोगे क्या? अरे नहीं, मैं बना करके भेजता हूँ, बना करके भेजता हूँ, बता नहीं दूंगा, बना करके भेजता हूँ। और बनाने के टाइम में आप लोगों को भी मैं कॉल कर करके पूछूंगा। ठीक है कि सर। तुम्हारा वाला तो और कोई एंगेजमेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ। बाकी इससे बेसिकली और ईशान से मुझे कंसल्ट बनाना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है ओके। ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, ये 2 पॉइंटर्स दिए हुए हैं हमारे बुक में related to angular dispersion, which is good to be highlighted. So I have picked it up. No. Percentage increase in refractive index of glass as we move from red to violet end of the spectrum of white light is approximately 2.3%. Now this is just informative, not of much use. ठीक है? In the dispersed beam, yellow color is taken as mean color and delta yellow is equal to delta V plus delta R by 2. ठीक है? ये मीन जो लेते हैं, येलो के लिए लेते हैं, यानी व्हाइट लाइट का अगर मुझे एंगुलर डिस्पर्सन या डिविएशन पूछा जाए व्हाइट लाइट का, तो आई एम गोइंग टू गिव इट फॉर येलो कलर। येलो कलर का जो डिस्पर्सन आएगा, डिविएशन आएगा ना, वही मेरा व्हाइट लाइट का डिविएशन हो। आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? एंड दैट इज गोइंग टू बी द मीन ऑफ डिविएशन ऑफ वायलेट एंड रेड। ठीक है? ये बात समझ में आई? यस सर। दिस इज कंसिडर्ड एज deviation or mean deviation of white light. Simply deviation or mean deviation of deviation or mean deviation of white light. ठीक है? We'll move on to the next page. अगला जो हमारा टर्मिनोलॉजी होता है इससे रिलेटेड, दैट इज dispersive power. Power generally represented by omega, dispersive power of prism. ठीक है?
ये बाय डेफिनेशन होता क्या है? बाय डेफिनेशन होता है the ratio of angular dispersion of between violet and red light and deviation suffered by mean ray, that is yellow colored light, is referred as dispersive power of material of prism. So dispersive power is, first of all, it is related to the property of the material which is making the prism. So omega is going to be simply equal to delta V minus delta R, ठीक है, upon delta Y, ठीक है. डेल्टा V क्या हो जाएगा? म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए डिवाइडेड बाय, ये ऊपर निकाला था हम लोगों ने, एंगुलर डिस्पर्सन यही था. डेल्टा y इज गोइंग टू बी म्यू y माइनस 1 इंटू ए. एंगल ऑफ प्रिज्म कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर एंगुलर डिस्पर्सन इज म्यू v माइनस म्यू r डिवाइडेड बाय म्यू y माइनस 1. इज दैट ओके? जिस प्रिज्म का या जिस मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा सेपरेट करेगा कंस्टिट्यूएंट कलर्स को. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. ओके. Okay. Now we are going to read few things from our book directly. Okay. Dispersive power of the material of prism given by this thing. Our eye is most sensitive to the part of the spectrum which lie between F line sky green and C line red of hydrogen. ठीक है. Our eye is most sensitive between F line and C line, that is red of hydrogen, and the mean refractive index of this part is nearly equal to the refractive index for the D line of yellow of sodium. Hence dispersive power
The following formula is internationally accepted. Refractive index of F line minus refractive index of C line divided by refractive index of D line minus 1. Here F, C are respectively sky green and red lines of hydrogen spectrum, and D is yellow line of sodium spectrum. Wavelength of these lines are respectively 4861 and 6563 and 5893 Armstrong respectively. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. The key information is this red bracketed line. Is that okay? Which we have just written. The dispersive power depends only upon the material of. The dispersive power depends only upon the material of the prism and not upon the refracting angle of the prism or size of the prism. Greater is its value for a material, larger is the span of spectrum formed by the prism made of that material. Dispersive power of flint glass is more than crown glass. Refractive index ज़्यादा रहेगा तो फिर dispersive power भी ज़्यादा रहेगा. Next thing is formation of rainbow and for scattering of light, Rayleigh law. Then phenomena based upon scattering. These are the things which we have to go through. So I'll just take 10 more minutes to walk through the rainbow formation. और ये बुक ये चीज जो है ना ये हम लोग अपने HSC या NCERT बुक से भी एक बार रिविजिट कर सकते हैं. When the sun shines upon falling raindrops, an observer with his back towards the sun sees the concentric arc of spectral color hanging in the sky. These colored arcs, which have their common center on the line joining the sun and the observer, is called rainbow. Usually, two rainbows are seen, one above the other. The lower one is called primary rainbow, and the secondary one is called the higher one is called the secondary rainbow. Primary and secondary rainbow. The primary rainbow is brighter and narrower. Having its inner edge violet and outer edge red. ये information is important. ठीक है. For the secondary rainbow, ये मैं इसीलिए highlight कर रहा हूँ. इसको note कर. Which is comparatively fainter, has reverse order of colors. ठीक है. So primary rainbow के लिए क्या है? So we should write it as that. Rainbow मैं लिखवा देता हूँ. रेनबो इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है. पहली चीज, two rainbows are formed. First one is primary rainbow and second one is secondary rainbow. ठीक है. Key characteristics. ये लिख लेते हैं इधर, बी लिख देते हैं. This is going to be ये darker or brighter, and this is going to be fainter. ठीक है. दूसरा point,
primary rainbow is lower and this is higher. ऊपर जो रहेगा वो सेकेंडरी होगा, नीचे जो रहेगा वो प्राइमरी रहेगा. Is that okay? This is secondary and ये प्राइमरी रहेगा. प्राइमरी. ठीक है ना. तीसरी चीज क्या है? द ऑर्डर ऑफ कलर्स. ठीक है, ऑर्डर ऑफ कलर क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ कलर इज गोइंग टू बी inner edge is violet and outer edge is red. So inner violet, violet and outer is red. यहाँ पर inner is red and outer is violet. Is that okay? और ये एक तो ब्राइटर होता है और साथ में नैरो भी हो. ब्राइटर एंड नैरो. और ये फेंटर एंड स्प्रेड. ठीक है, या ब्रॉडर बोल सकते हो. ठीक है. अब बाकी फेनोमेना दिया हुआ है वो नोट कर लिया था हम लोगों ने. टेबल sir. ये क्या नाम है? मेहर बेटा नोट किया आपने? हाँ. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इस पर. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कलर रेनबो. ये फेनोमेना जो है वो खाली पढ़ लेना होता है, इससे कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं. Rainbows are formed by dispersion of sun rays in raindrop. The primary rainbow is formed when sun rays, after suffering one internal reflection in raindrops, emerge at minimum deviation and enters observer's eye. सन ड्रॉप रेन ड्रॉप्स पे सन का लाइट पड़ता है. पहला टोटल इंटरनल सन ड्रॉप ये इस तरीके से रेन ड्रॉप और सनलाइट आया, रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होकर के फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसका. दिस इज रेन ड्रॉप. सन रेज आएंगे, डिविएट होकर के यहाँ आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के बाहर निकला. फिर यहाँ से ये सेंटर है, नॉर्मल है, इस तरह से हमारे आईज पर आता है. फर्स्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ये डायरेक्टली हमारे आईज पर आता है, फॉर्म्स द प्राइमरी रेनबो. इज दैट ओके? Emerge at minimum deviation and enters observer's eye. In figure 8, P1 and P2 are two raindrops. Figure 8. P1 and P2 are two raindrops. P1, P2 are two raindrops. E is observer's eye, S is the sun. The sun rays fall on drops parallel to SE. So SE, this is sun, SE. Okay, parallel to SE. ये रेज की बात कर रहे हैं हम लोग. We are talking about these sun rays which are falling parallel to SE. If the rays are deviated and dispersed by the drops so as to arrive at the observer would receive intense light in those directions in which the rays suffers minimum deviation.
it can be shown that he would receive red light at a direction making an angle of 43 degree and intense violet light in a direction making an angle 41 degree with the SE produced. SE produced के साथ अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग कलर्स दिखेंगे उसके. The drops sending the intense red and violet light to the observer lie on the concentric circles, which generate cones of semi-vertical angle 43 and 41. These are the वो cone angles basically जिसकी हम ये बात कर रहे हैं of different colors. ठीक है. Next thing is, thus observers see concentric color arcs which the innermost is violet and the outermost is red. Innermost is violet and outermost is red. Intermediate color lie in between. This is primary rainbow. Formation of secondary rainbow. The secondary Fenter rainbow is formed by sun rays undergoing two internal reflection in raindrops and emerging at a minimum deviation as occurring in drop S1 and S2. In figure, the semi-vertical angle for these bows are 51 degree for red and 54 for violet rays. As such, the order of color is reverse of that primary rainbow. पहले वाले में क्या था? 51 for red, दूसरे वाले में 51 for red and 54 for violet है. पहले वाले में 41 for ये रेड के लिए 43 था, ज्यादा एंगल था. यहाँ पर रेड के लिए कम एंगल हो गया. ठीक है, पहले रेड के लिए ज्यादा एंगल था, राइट. Receive red light in a direction making an angle 43 degree and intense violet light in a direction making an angle 41 degree. ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है. Bow are 51 degree for red, which is lower. 51 degree for red rays and 54 degree for violet rays, and therefore the order is reversed. Is that okay? Making Yes, sir. यहाँ पर एग्जैक्ट डायग्राम बनाया हुआ है और ये आई थिंक ये पीडीएफ मैंने आप लोगों से शेयर किया था. पॉसिबल हो तो इसको आज ही रीड कर लेना एक बार, या अपने वाले बुक से रीड कर लेना, जहां से भी रीड करना है रीड कर लेना. ओके सर. ठीक है, ठीक है. आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं. कल के दिन में वी आर गोइंग टू डू द स्कैटरिंग रेलिक्स लॉ एंड Okay. फेनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग. ये पढ़ लेना. एक्चुअली रेलिक्स लॉ खाली समझाऊंगा मैं, और ये अच्छा, चीजें पढ़ने की चीज है. आप लोग पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है ठीक सर. है, and then ठीक. we will start dealing with numericals. I'll try to finish it off tomorrow itself. है 15 17 18 है, कि but मैं try करूंगा. कल से ऐसी इसी टाइप पे होएगा ऑप्टिक्स का. हाँ हाँ, ठीक है सर. ठीक है. और